Galeries Lafayette. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये कितना अच्छा इन्होंने कैलीग्राफी को यूज करके पूरा इसका जो है एक्सटीरियर बनाया हुआ है ना, जबरदस्त। और ये गिफ्ट थैंक यू। आई थिंक सन उधर ही वापस जाना सी, बट इट्स ऑलराइट। उधरों भी है सिटी एंट्रेंस। पैरों में देखिए या so this is Gallery Lafayette. आगे कतारा कल्चरल विलेज है एंड देन कतारा बीच। और इस गैलरी की और इस जगह की जो बात है वो ये है कि इसमें इन्होंने ओपन एयर में एयर कंडीशन लगाए हुए हैं कि जैसे ये गर्म मुल्क है और यहाँ पे गर्मी होती है, तो दिन के वक्त भी कोई आना चाहे आ सकता है, इंजॉय कर सकता है। क्योंकि अभी भी हम चल रहे हैं तो बाहर की जो गर्मी है उसके बजाय इसकी ठंडक महसूस हो। बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये कि दीवारें और वो सब खूबसूरत बनाया हुआ, बल्कि आर्किटेक्चर पूरी जो बिल्डिंग्स की खत्ताकी और खूबसूरती के साथ जो तराशा हुआ है बेहतरीन। Hey, look, सामने वो गोल घुमा ली देगा। You want to do it? Yeah. हाँ। घड़ी लगी हुई है और यहाँ टाइम हो गया 10 मिनट कम 5, 5:15 बजे। मगरिब है और सूरज। I can take a picture here. Please. I think it's
सामने कल्चरल विलेज है, that's beautiful. That's where we went today. Yeah, the whole thing is linked to the Firagu beach and side. And sunset के मेरे Sama bites. हमने तो कौन नहीं थी. Yeah. वो भी है सामने. ओ यहाँ पीछे मस्जिद भी है कतारा वाली. काफी कुछ चीजें देखने वाली. गैलरी मार्च के ना पंचेला बता. इसी बंदूक ने. Literally. What is this? इनके मजे फ्री में घुमाते रहते. Oh, you wanna go by this and then we come back by walking? Can we do that? Yes, yes. चलो फिर. I think that you go inside here. पहले इधर चलना. That I have no idea. but she's मतलब मैं इसे जब बन रहा है सारा. Number 16 लिखे था. I don't know what number 16 is. Either it's a hotel or something. Opera theater. Yeah, then it's so. अगर इतने कोई फाउंटेन शो ना होता ना तो पब्लिक होती है तो कोई है नहीं. हाँ मेरे भी ख्याल है. 2 मिनट रह गए ना देखने. Or maybe no one knows. अब ये रात का व्यू है सारा. ये लाइटिंग और यहाँ पे फिर से एसी की ठंडक और बेहतरीन ब्यूटीफुल प्लेस. मजा आया. ब्यूटीफुल. अरबिक कंट्रीज में कैलीग्राफी बेहतरीन. गैलरी की जो वन ऑफ द शॉप्स है उसका ये इंटीरियर. ये बड़े ड्रामेटिक स्टाइल में उतरती हुई सीढ़ियाँ. इस तरफ से चढ़ के और उस तरफ से नीचे. बेहतरीन.
सब्जियां फल बेचने का यूनिक स्टाइल खूबसूरत है, लेकिन ये महंगे स्टोर है। जितनी डेकोरेशन उतना ज़्यादा पैसे। और सेब के पास से गुजरते हुए इतनी कोई खूबसूरत किस्म की खुशबू से हम उन कंट्रीज में रहते हैं, हमें वहाँ हर तरह का फल मिलता है लेकिन इतनी अच्छी खुशबू नहीं मिलती। वो इतने केमिकल्स हो रहे होते हैं, इनकी खुशबू ही बता रही थी ये सेब कितने मज़े के होंगे। अभी हमें काफ़ी तेज के लिए काफ़ी प्यास लगी है। हम लोग कोई जूस लेने आए हैं। हमें बताया गया था कि यहाँ फाउंटेन शो है, कोई भी जूस अभी हम यहाँ बैठ के गाड़ी के आने का वेट कर रहे हैं और ये खूबसूरत शाम है जिसको मैं कैप्चर करना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर वापस जाके हमें ये जगह ये चीज़ें ये सब याद आता है। ये कांच की बनी हुई है, कांच के शीशा होता है उसका। अगर आपने आज के व्लॉग को एंड तक देखा, एंजॉय किया, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।